और आज कार्यक्रम में इस सेशन की अध्यक्षता करने वाली हैं वासमल्ली के मैम। उनके बारे में परिचय देते हुए मुझे खुशी हो रही है। तमिल और टोडा की द्विभाषी लेखिका है मैम, विदुषी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने नीलगिरी जिले और तमिलनाडु के आदिवासी समुदायों की बहुत सेवा की। आपकी एक सह प्रकाशित पुस्तक टोडा मौखिक साहित्य का एक संग्रह मारुम उलागिल मारैया ओलीगलाह थोडर वेमैशी इलक्कियाथिन ओरू थोगुप्पू है, जिसका आपने तमिल में सह अनुवाद भी किया है। आप टोडा कहानियों, गीतों और संस्कृति पर आधारित लेख भी लिखती हैं। आप राज्य जनजातीय कल्याण समिति की सदस्य हैं। जोरदार तालियां, स्वागत है मैम। अब परिचय हमारे पैनलिस्ट का। हमारे पहले कवि हैं विनोद गौड़े जी, जो कि प्रतिष्ठित कोंकणी लेखक और कवि हैं। आपकी कई कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें उल्लेखनीय है दिस्ता ताशे नास्ता कोंकणी नाटक है, ये खड़ी साखर कोंकड़ी ये कहानी संग्रह है, पिसो मोग कागदी फूल बासु वन हो फॉग। आपकी कविताएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपने कई नाटक भी लिखे हैं, जिन्हें प्रमुखता से मंचों पर प्रदर्शित किया गया है। जोरदार तालियां गौडे सर के लिए। अगला परिचय जो मौजूद हैं हमारे सभागार में, मैं उनका परिचय करूंगी और हमारे कुछ सदस्य आने में असमर्थ रहे। तो अगला परिचय है बखिया मोन रिंजाहा जी का, और उनका स्वागत करते हुए उनका परिचय कि उमर शिल्पी कॉलेज के खासी विभाग में मैम सहायक प्रोफेसर हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में 5 अनुवादों के अलावा काशिम किलियान किन तियेन हा का खासी भाषा विज्ञान है का थिम्मेई बाद की खान तांग्यू यू खासी मिथक है, ये एक की सुर माइलंग ना की क्विन का दोहनुद जो कि खासी कविता है, ये सभी शामिल हैं। आपकी एक अनुदित पुस्तक प्रेस में अभी भी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अब बिजोय देव वर्मा जी स्वागत करेंगे। ये ककबरक लेखक हैं। आप एम्स में नेत्र विज्ञान के एमडी हैं। आपकी रचनात्मक लेखन में गहरी रुचि रही। ककबरक लोक कथाओं के संकलन के अलावा आपका एक उपन्यास, 4 कहानी संग्रह और 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप डिजिटल ककबरक साहित्यिक पत्रिका खोलोंग मका कोक बवाई के प्रधान संपादक भी हैं। आपको श्यामलाल देव वर्मा मुकुम पुरस्कार, राधा मोहन ठाकुर स्मृति पुरस्कार और भीष्म देव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर समय निकालने के लिए। अगले मेहमान हमारे मेदिनीधर जानी साहब हैं। जानी साहब लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और एक किसान हैं। आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आप आदिवासी भाषा और संस्कृति की वार्षिक पत्रिका भीम के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। आप कंद संस्कृति सुरक्षा समिति और बनवासी कल्याण आश्रम कालाहांडी जिला सहित कई आदिवासी संस्थाओं के अध्यक्ष, ओडिशा सरकार की जनजातीय भाषा और संस्कृति अकादमी की समिति के सदस्य हैं। आपको आदिवासी प्रतिभा सम्मान 2020 प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत है सर। अगला नाम गुमान से लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि इनका नाम ही है गुमान सिंह सुब्बा। सुब्बा जी प्रख्यात लिंबू कवि, कथाकार और निबंधकार हैं। आप सिक्किम नेपाली साहित्य परिषद, लोअर चांदमारी कल्याण समाज, एमेंतन सुंग और इंगसा बुलेटिन सहित कई साहित्यिक संस्थाओं और संगठनों से संबद्ध रहे हैं। लिंबू के अलावा आप नेपाली में भी लिखते हैं। आपके प्रमुख प्रकाशनों में सिलम सकम, मैं सही हूं और विज्ञापन उल्लेखनीय हैं। आपकी कविताएं, लेख और कहानियां कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप सूचना और जनसंपर्क विभाग सिक्किम सरकार गांतोक में कार्यरत हैं। जोरदार तालियां। और इसी के साथ अब मैं हैंडओवर करती हूँ अपने इस सेशन को मैम की तरफ। सर आ चुके हैं। इतने शांत स्वभाव वाले, जिनकी उपस्थिति ही मैंने नहीं दर्ज की। क्या अगर मैं गलत नहीं हूं, टीम मुझे एक बार वहां से नाम। ओके सर, थैंक यू सो मच।
और अंतिम कड़ी में मुख्य अतिथि के स्वरूपों में हमारे अगले मेहमान का हम स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। लाल थंग लुआंगा चोंगथू, जो कि प्रख्यात मिजो लेखक और कवि हैं। आपकी 5 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें एक कहानी संग्रह, एक उपन्यास और एक कविता संग्रह शामिल है। आप मिजो पोएट्री सोसाइटी, मिजो एकेडमी ऑफ लेटर्स के सदस्य और मिजो राइटर्स एसोसिएशन के समिति सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली सीक्वेंस वाइज हम चलने वाले हैं। मैं मैम आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हिंदी में बोलना आवश्यक, हमको राष्ट्रभाषी है, इसलिए मैं हिंदी में समझते बोलने का अच्छा नहीं। हम सबको नमस्कार। मैं इस सेशन के पहले सोचते एक प्रेयर, माउंटेन प्रेयर चलना चाहिए। हम सब लोग ट्राइबल्स ना, इसलिए हम लोग नेचर प्रेयर के बाद डिस्कशन जाना पड़ेगा ना। आई विल से मैं बोल देती हूँ, हम इस प्रेयर को साथ में मैम के साथ गुनगुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपका साथ दे पाएं। जी, it is a mountain prayer. Every year we used to do in our community. Whole community goes there and they do this prayer. After praying in my language, then I will translate. Okay, sir. Mot nor tu parmordum putmordum tononmo tarmomo mojodmo mounmo karmo pedmo povmo koimo yinmo tarmomo tononmo. This prayer is like, let clouds form, let rain come, let the then it should be like let rain come, then let the fertilized land will come after raining, no? Then all the animals like buffaloes, particularly in our total language, that give a calves, cows will give a calf, then we will have a lot of milk in the villages. Then we'll if we do Tonanmo means we all will get peace of mind. Doing a good things, God will give us a good result for our better way of life. That is the common prayer every year we used to do. It is for common for the human being. In our community, others call us or told us, but we call ourselves all. All means mankind. So our place, regarding our place, our cultures are there. It is supposed to be for everyone. I'm very, very privileged to be in this session. I'm very thankful to Sahitya Academy, and we are yesterday, on the inauguration day, we saw whole India in half an hour, all the different cultures. It is amazing. It is good opportunity for us to be here. And I have been to met so many programs and different tribal people. Inter-tribal meet also have been. I was happy to dance with them. I am happy to sing with them. And I heard the different voice of the tribal people. So in this section, I'm very, very proud to be here. And also, even though I'm not good at Hindi, I can understand. But I read about all my tribal mates today in this thing. They are very, very eminent persons. They are scholars. They formed linguist associations, and they are working on the behind very hard ways how to protect their languages and how to protect their cultures. Really, it's great to be in the midst of those things. Now I'm going to listen their prayers. Thank you for taking time. You can announce. Thanks to Sahitya Academy for inviting me second time in UNMESH.
मेरी पहली कविता कोंकणी में, बाद में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। शीर्षक है एकसुरी जीण। जीण हांव सारता रस्त्या कुशीक रावता, उगड्या पायांनी भोंवता, आडे कडेक न्हिदता, घरां पळयल्यांत अचूक, भितर मेळना वचूक। जीण हांव सारता रस्त्या कुशीक रावता, शाळेंतलो आवाज कानात घुसता, अक्षर चिरता तोच शिकता, पाटी केन्नाच घेवना, शाळेंतूय वचूना। जीण हांव सारता रस्त्या कुशीक रावता, एका उणयेच्या आशेन भोंवता सगळ्या दिशेन, मुद्दाम उपाशी रावूना, पोट केन्नाच भरूना। जीण हांव सारता रस्त्या कुशीक रावता, वतान करपलो, पावसान भिजलो, थंडी जोरान जावना पिडेस्त, कुडीन राखले म्हाका मस्त। जीण हांव सारता रस्त्या कुशीक रावता, शिकवण दिता तुमची मुलां, भुरगीं देवाघरची फुलां। मागीर ह्या अनाथ कळ्यांची जिणेमाळ कशी गुंतपाची, एकसुरी जीण कशी फुलोवची। अभी मैं हिंदी में। अकेली जिंदगी। हम जिंदगी गुजारे सड़क के किनारे, नंगे पैरों से घूमे, इधर उधर सो के झूमे, मकान देखे हैं बहुत, अंदर जाने नहीं मिलत। हम जिंदगी गुजारे सड़क के किनारे, बच्चों की धुन कानों में गूंजती, अनुरेखन के बिना नहीं पढ़ पाता, पाठी किताब नहीं लिया, पाठशाला में भी नहीं गया। हम जिंदगी गुजारे सड़क के किनारे, एक घास के आस में भटकता रहा दिन में, जानबूझकर भूखे पेट नहीं सोया, भूख से नींद नहीं आई फिर भी नहीं रोया। हम जिंदगी गुजारे सड़क के किनारे, गर्मियों में पसीना बहाया, बारिश में बदन भिगोया, सर्दी जुकाम नहीं छू पाई, तन मन में हिम्मत छाई। हम जिंदगी गुजारे सड़क के किनारे, सीख पढ़ाते बच्चों को, नन्हे प्यारे भगवान को, फिर इस अनाथ ने किसके भरोसे जीना, अकेला जीना कैसे खिलाना। मेरी दूसरी कविता पाऊस। कोकणी। पावसाची वाट पळयत रावलो जमीन नांगरत, नजरेन मळबाक तोखेत, दुख वावली दोळ्यांत, रीप रीप झडटे पावसात, बी फाफडले मातयेत, आंगणात रेबो दाटलो, शेतान कोमारो फुटलो, आंगातल्या गळट्या घामान, फापडिल्ल्या साऱ्या नेटान, शेत फुलता पिकेन, मन नाचता खोशेन। जगूल गडबडीन गडगडटा, बोवाळान आवाज फाटी सांडटा, ढग आपलो खेळ खेळटा, तरेकवार गजाली जुळटा, धावून येता बुट्टी दुश्ट, व्हावून वता केल्ले कश्ट। पावस बऱ्याचो, पावस वायटाचो, पावस मोगाचो, पावस दुश्टाचो, पावस पिकेचो, पावस उठंगराचो, जाय नाका असो पावस। हिंदी में बारिश। शीर्षक बारिश। बारिश की राह देख के लगा मिट्टी जुटाने, गगन की ओर नजरें मिला के आंसू बहने लगे आंखों के। रिप रिप बरसते बारिश में बीज डाला मिट्टी में, आंगन में मिट्टी आटे, खेत में अंकुर फूटे, बदन से टपकते पसीने से, फैले हुए खत की ताक से, खेत में फसल उगला, खुशी से मन खिला। गड़गड़ाहट के समय आवाज पीछे ही छोड़ के बादल अपना खेल खेलता, हर चीजों का होता मिलाप, दौड़ के आती है बाढ़, करते हैं सब बर्बाद। अच्छा बारिश, बुरा बारिश, प्यारा बारिश, चाहत अनचाहत सा बारिश। अब मेरी तीसरी कविता बाप। आवयच्या गर्भान जन्मलो, बापायच्या नावान वळखलो,
आवय वेंगे न्हिदयता, बापूय चलपाक शिकयता. भायल्यान बाप दिसता कडक, भुरग्यांचे दुकानी जाता नाजूक. खांदार बसून गांव भोंवडयता, गोडो जावन घरान गोंडायता. भुरग्यांची उमेद जोडटा, कमयल्ली जोड मोडटा. बापाय विणे जिणेन येता रडू, सगळें लुटलें तरी बाप नाका सोडू. मनीस केदोय व्हड जावं, बाप भुरग्यांक सदांच व्हड. बाप भुरग्यांक सदांच व्हड. हिंदी में पिता, माँ की कोख से जन्मे हम, पिता की पहचान से जानते हम. माँ गोद में सुलाती हमें, पिता चलना सिखाता हमें. बाहर से सख्त दिखते, बच्चों के आंसू से टूट जाते. कंधे पे बिठाकर गांव दिखाता, पीठ पर चढ़ा के घर घुमाता. औलाद की खुशी के लिए उम्र भर की कमाई खर्चाए. बिना पिता जिंदगी में रोना ही रोना. लूट जाए सब पर पिता को नहीं खोना. आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, हमेशा बड़ा रहेगा पिता. हमेशा बड़ा रहेगा अपना पिता. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ही खूबसूरत कविताएं, अकेली जिंदगी, बारिश और पिता, तीनों ही शीर्षक शानदार और तीनों ही कविताएं बेहतरीन. अगला नाम बखिया मुन रिंजहा में. A very good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Bhakya Monrincha, Assistant Professor of Umshirpi College. I'm a writer, a poet, a translator, and I love culture also. Then the name of my poem, my first poem is about our country, patriotic song. With pride we sing, all together we stand to praise the name of our motherland. Seasons of falsehood has come to an end. Folk tongue of the British at last he laments. Know then, O youth, it's on your shoulder. Raising nation's fame, you should be outer. It's on you, the fate of the future lies. Stand firm against the foreign spies. For you, beloved India, our king, a fearless chief, Siem Tirot Singh, to achieve freedom, fearlessly fought, vigorously with arrow and sword. Mahatma Gandhi, freedom to achieve, with non-violence, his followers he perceived. So footstep he led, forever do endure. Remember, O youth, now and in future. In my language, Jingruai Lakari, da Jinkmen Yirwai, Haransan Bang Yang, Ban Pen Po Pen Pieng, May India Gakerting, Blakut Gayom, Kaspa Pen Shobi, Utli Bapna, Unong Way Lasmi. To tip Kun Samla, they had their peng jong pi, Lana Pen So Sing, Ya Lagachong Kari. They have he can away, Rijunom Kane, Hey Hoots and Charnong Way, what equa, what tre. May India ba it, they namar jong pi, Utirot Sing Usiem, Bakrao Jongi, Bansuk Kilong Dien, Clem Reed Uele, Clem Sally out home, Yashibun kitching air. Mahatma Gandhi, Ban Yachting like Louis, the non-violence, Uyalam Lanong Wood, Yadin Chachong U, Ban Klet Bangim Day, Can Mao Kun Kari, Mentabat away. Then my next poem is Sweet Memories. With great enthusiastic, I stand like siblings in our motherland. Greetings with love on this very day. What a pleasant I love to say. I sing this song with all my heart. Meeting new friends make me so glad. Unity we stand, do not understand, with different mother tongues of every land. Where can we get a chance like this? A pleasant feeling I cannot list. Though from different regions we came,
ideas we share almost the same. A sweet token of remembrance to you, my friends, I take a chance. Before we part, though really sad, to bid goodbye, I feel so bad. Goodbye, my friends. Before I leave, with best wishes to you I give. God be with you in every strife, as long as we all alive. Thank you. मुझे लगा कि मैम हाँ अपनी मातृभाषा में सुनाने वाली है। बहुत ही खूबसूरत मैम, नेशन एंड स्वीट मेमोरीज। और हम तो यही कहेंगे कि डोंट से गुड बाय। नेक्स्ट अनुरोध करूंगी विजय देव वर्मा सर। Good afternoon, everybody. With thanks and gratitude to Sahitya Academy regard to chair up to this August event. Today I would like to recite 3 poetry. First poetry will be with my mother tongue Kokborok. Few stanzas I'll read, then I'll straightforward I'll go to the translation. My first poetry name is in my Kokborok. Long training ekolobo. Orjunono ungnaruglak chetwang fang. Nung nakatang horke. Orjun bomnak lainai khorok. Kurui mai ni simi. Bukcha mung ni simi. Ungs mai ni busloya diari kaboy. Shak baitang. Yasuk fanong dinung badukung kurung. Orjun song tiar. Rashoit lang nambagoy nini asima bura. Bini uklogotango. Kabang maduna charjo. Now I'll go to the English translation. Ekolobo of long try. Arjun would not let you to become Chetwang tree. In case you touch the sky, it would hurt the pride of Arjun. Whatever you learn by yourself, by meditating in emptiness, in the seed of creation, whatever expert archer you become, Arjun are all the time ready to chop your thumb. Yes, Arjuns are backed by number of Dronacharjas. The goddess of fortune Lakshmi, generous for Arjun, she emptied her copper at his yard. The goddess of knowledge Saraswati played her violin in his house. The moon flooded his house with its light. The sun set its fate to enrich him. Ekolobo, you are just like Abhimanyu. While dealing with you, Yudhishthir and Dronacharya forget their enmity. They join hand, force alliance, together laid the trap of death to hunt you down. Ekolobo, why you desire to climb the summit of Longtrai? There is rice beer at its top. If you succeed to taste it, colorful dream will bloom in your eye. You will desire to watch the sunrise and also the Kanchenjunga at that moment. You will wish to enjoy the beauty of Tiger Hill, the majestic cloud changing color over the hill. You will want to build Ajanta and Ellora with your indigenous skill and imagination and eternal innovation. Arjun are jealous, expert in camouflage. No dirt of garment for them. Easily change their color. They guard every traffic point, every route, every turning, nook and corner, in chair, in the table, in the file, in the note. They are all the time alert and ready. Once you reach near the summit of Longtrai, they will chop your thumb. This Longtrai is the name of a hill in my state, and this Chetwang tree is a legendary tree. This mentioned in our folk tale. The second is, why should not I dance like Shiva? You have kept me waiting for the outside of your house for the last 46 years. You have avoided me. You have mutilated my dream, smashed my nursery without slightest hesitation. I have been crying for the last 46 years.
Raima and Saima rivers become full to the brink with the stream of my tear. Now Dumbur fill up with broken piece of my heart. Now you want to bloom lotus in the lake of my tear. You are extracting light, dealing my eye, but never bother to remove darkness from my sight. Now roughen and toughen hair in my head, jungle of fungus in my eye, hours of revenge at the tip of my serpent nail, in the chest bison's horn taken place in place of heart. Both my feet are overwhelmed with rage. Why should not I dance like a Shiva? Just like true lover, I wanted to offer my tender heart by pinching your nose. You told me my nose is flat, my eyes are tilted, with wild smell in my body. You have declared me unfit yet to be candidate of your love. For the last 46 years, you never bothered to give me shadow, never responded to my call, rejected me again and again. You failed to be mine. Now both of my feet are overwhelmed with feet. Why shouldn't I dance like Shiva? ब्यूटीफुल रिटन बाय ब्यूटीफुल थॉट आगे बढ़ेंगे और One more for last. Last. Everybody must be knowing the story of heart-wrenching story of the Ekolobbo. Ekolobbo, how his thumb was Ekolobbo, how his thumb was snatched away. Yeah. My first poetry, his thumb has been taken away. Now he's claiming back his thumb. Claim back your thumb. Dronacharya is not now bankrupt, rather indebted to you. Days of paying back to mentor is over. Ekolobbo, claim back your thumb that has been snatched away from long time back by crookery. The wind whistles, smell your blood, now turned into melody of equality, ready to initiate the day of reckoning. The land which held the drop of your blood, poetry of defiance against tyrant, taking roots there. The grass which is touched by the drop of your blood, now reciting saga of your struggle, your hymn of triumph. The 1,000-year-old wall is shaky, unstable by its own weight. Now the hollow shadow getting back their body, the face on forced sleep, opening up their eyes, the forbidden word jeering up for expression. The days of Grodakshina is over. Ekolobbo, you are having arrow that can defeat the sound barrier. Take a bow. Resurrection is your weapon. Now it is time to claim back your thumb. Thank you. बहुत ही खूबसूरत सर। एकलव्य और द्रोणाचार्य, गुरु शिष्य परंपरा की अगर हम बात करें तो उससे बेहतर गुरु और उससे बेहतरीन शिष्य नहीं मिल सकता। आगे अनुरोध करेंगे हम मैदिनी धरजानी सर। नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ, जय आदिवासी, जय उन्मेष। All the wise men, poets, and my beloved audience, really I am so fortunate that I have been invited to participate in the glorious अंतर्जातीय साहित्य महोत्सव उन्मेष। पहले हम बोलेंगे जो बारे में कविता लिखा हुआ है, ये हमारा कलाहांडी का वो एक आदिवासी है जिसने अंग्रेज के बारे में शहीद हुआ, लड़ाई करके शहीद हुआ था। इस बारे में एक कविता है और पहले इसको जानकारी देना चाहिए इस बारे में। You might have known that the Shedil tribe people participate Kansas as part of all fought against the British as freedom fighters. Out of them, one Kanda hero was Sardar Rendo Majhi, who was born in the remote part of village
Lubengarh, Ulladani of Kalahandi district in Odisha. Rendo Maji fought against the British disguised by staying in the dense forest of the locality. In the meanwhile, one of his relatives, by 10 rupees silver coin, helped the British to arrest Rendo Maji. Rendo Maji was arrested and was kept in Rasol Kundal jail from 1853 to 1855. As the leader of the Kandas was arrested, all the Kandas became furious, rebelled against the British. The British changed Rendo Maji and moved him village to village. In that war movement, the Kandas encouraged themselves to fight against the British, and this is the theme of this poem. In the month of December 1855, Macallan Sahib was living at Ulladani in the temporary camp. One day, the Kandas attacked the camp unexpectedly and brought him to their control. Then the clever Tahsildar Kandwal released Macallan Sahib from the Kandas, and that day was 10 December 1855. With anger, Macallan Sahib pulled the gun from one of the Sipahi and fired Rendo Maji on his chest. Rendo Maji died there and became a martyr. We, not only the people of Odisha, but also all over India, are proud of Kanda Sardar martyr Rendo Maji. जय रेंडो माजी, जय हिंद। इसका बारे में कविता है, हमारा कंध, इसका कंधान भाषा में है। ओट पुता रेंडो माझी डाको छे, रेंडो माझी हाको छे, ना सुनते गुरा छाती चल केरो छे, ना सुनते गुरा छाती चल केरो छे, उठ पुता रेंडो माझी डाको छे। खेतर ढिकुन होते तके पेटे चाबो छे, खेतर ढिकुन होते तके पेटे चाबो छे, नाकर निशा हुक केत कले पुनी कूट केरो छे। आमर मात ताके गुरा छाड़ाते नियो छे, आमर माता के गुरा छाड़ाते नियो छे, एटेटे आड़े जानी भीम टांगी कांदो छे, एटेटे आड़े जानी भीम टांगी कांदो छे, उठ पुता रेंदो माझी डाको छे। कौन पिला बाघ पिला काके डरला छे, कौन पिला बाघ पिला काके डरला छे, धून कान बादशाह टांगी धरते आ बोलो छे, धून कान बादशाह टांगी धरते आ बोलो छे। गुरार संगे जूत कहते मारते नियो छे, गुरार संगे जूत कहते मारते नियो छे। मैकेन साहब के रिंदो माजी खोते देखो छे, मैकेन साहब के रिंदो माजी खोते देखो छे। 2 बछर जेल भुगलो छुचा काता के, 2 बछर जेल भुगलो छुचा काता के, लोहार शिकली ने बांधते गाँ बुलाते, लोहार शिकली ने बांधते गाँ बुलाचे। रेंदो दुख देखते कौन मेल उठा छे, रेंदो दुख देखते कौन मेल उठा छे, उल्लादिनी ने साहिब डेरा बांधला छे। उठ पुता रेंडो माझी डाको छे। धीरनी खुटा जाड़ेन मा आ बोलो छे, धीरनी खुटा जाड़ेन मा आ बोलो छे। 10 डिसेम्बर ने तोरना के सोर पाका छे, 10 डिसेम्बर ने तोरना के सोर पाका छे। कालाहांडीर बीर माटी तके खजो छे, कलाहांडीर बीर माटी तके खजो छे। माटिर मतो जीवन देते शहीद हला छे, माटिर मतो जीवन देते शहीद हला छे। उठ पुता तके रेंडो माझी खजो छे। ये तार मीनिंग, in English. Rise son of the oil, Rendo Maji is calling, Rendo Maji is waiting. Hearing the name of British, heartbeat increasing, bucks in bed are beating and belly. The breath of nose is decreasing,
the British is taking forcibly our motherland. Tete, sound of crying. O Jani, Kanda, priest, spares, asks Bhima, is crying. Kanda, boy's son of tiger, does not afford any else, saying to come, holding bow, arrow, spear, axe. Fighting with the British, bring dead body. Do you see Rendo searching Meccan Sahib? Without allegation, started 2 years in jail, binding with iron chain, moved you village to village. Seeing the sorrow of Rendo, the Kanda had reached the Sahib camp in Urladani. Dhinni pillar, a wood of pillar, worship the village as symbol of the goddess. Mother Jaren, Kanda goddess, calling you with the Kandas, remember you, 10 December, the Bhir soil of Kalahandi is remembering you. Sacrifice the life of the soil and they became the matter. Raijan, Raijan, Rendo Maji is calling. बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने शुरुआत की थी कविता की फ्रीडम फाइटर से, और हम जिस जगह बैठे हैं और जिस प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश भी गौरव दिवस जो मनाता चला आ रहा है, उसमें एक गौरव है आदिवासी क्षेत्र के बिरसा मुंडा जी, और हम उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं हमेशा। जी हाँ, भीमा जी। चलिए अब अनुरोध करती हूँ मैं गुमान सिंह सुब्बत साहब से। Very warm good afternoon and Sewar to everyone present here. Respected chairperson, renowned writers, poets, and my dear friends. Myself, Guman Singh Limbu, representing Limbu language from beautiful small state, Sikkim. First of all, I would like to thank Sahitya Academy Delhi for giving me an opportunity to representing our Limbu language on this historical literature festival. मैं पहला कविता हमारी जाति और परंपरा से जुड़ी पालम जो एक गीत की फॉर्मेट में होती है वो मदर टंग में सुनाती हूँ, और दूसरा जो दो मेरा इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो मैं बाद में सुनाती हूँ। और पहले मदर टंग में ए पुबुंगला सिगांग सुपसिंगे बा आधा को पान्हा चिंगसिंगे बा केदगी चेक्खु ल आगनु मिमजिरे कुदाई पोङा गनु ए मुनामा इंग मांगनेरो लामसाङबा इति हांगनेरो फोन्दा कि हन्दे तुमे आङ याङयाङबा पोखे खेने आङ ए पेंगो इ सिगाङ चिखे ओ नेरवेत सिगाङ लिखे ओ यम्मिले आम्हाङ नेम्बा रछ इतुआङ निङवा तुक्पा रहेछ ए हुप्सिङी पोना इङुङ लआ माङसेबुङ तेन्नु तेरुङ लआ थोप्राफुङ इची वातेओ तेन्दिङ रे पान्हा पातेओ। दिस इज वन ऑफ द गीत का फॉर्मेट है जो रात भर चलता रहता है, लेकिन मैंने जस्ट उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। और मेरा दूसरा कविता जो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जिसका उद्देश्य प्रैक्टिकली हाथ से जुड़कर पृथ्वी को सेवा करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जेनरेशन हाथ नहीं लगाते हैं, जस्ट दे आर गोइंग फॉर सेमिनार एंड आस्क फॉर ऐसे करो वैसे करना चाहिए, ऐसे इसी उद्देश्य में मैंने शॉर्ट पोएम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। टाइम इज चेंजिंग टू ग्रो द कैपिटल ऑफ द कंट्री, पॉप प्लांटेड टिल द इवनिंग, many saplings of simal, sas, payu, bamboo, payu, aru and champ, these are varieties of saplings, and return home in the twilight. To grow the capital of the country, pop planted till the evening, many saplings of simal, sas, pine, bamboo, payu, aru and champ, and return home in the twilight. The sun holding a plant sapling saved the forest,
poster, loitering in the vigilance camp comes home at night. The son asks not where the pup went during the day, neither the pup looked for a synonym for the camp. This is my another. और दूसरा अंतिम में मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ कविता सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। मनुष्य के शव यात्रा में जाने का इच्छुक हूँ, मनुष्य की शव यात्रा में जाने का इच्छुक हूँ। सोचता हूँ जाना न पड़े शवों द्वारा कंधे पर उठाए हुए दूसरे शव की शव यात्रा में, पर मैं खुद भी चल रहा हूँ वैसा ही शव बनकर उसी शव की शव यात्रा में। जब मैं शमशान पहुँचता हूँ और देखता हूँ बहुत से शव पैर फैलाए सो रहे हैं, पर किसी का नाम मुझे पता नहीं, हो सकता है किसी को भी पता नहीं, इसीलिए उनको शमशान कहा गया होगा। जितना भी उसे पहचान देने की कोशिश करे, कोई कहता है यह सब तो उसका है, कोई यह भी कहता है उसी के करीब किसी और का है, कोई आकर सीधे पूछता है यह किसकी कब्र है। सांस लेते तक हम मनुष्य के रूप में जी नहीं सके, मृत्यु होकर होना कब्र न बनने के लिए क्या कर सकते थे। मानव के इतिहास में हर समय पेट ने ही राज किया है, इसी पेट की लड़ाई में हमेशा मनुष्य पराजित हुआ है। जी हाँ, जो सब लेकर अभी हम चल रहे थे वो भी इसी लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और लड़ाई लड़ने का उसे समय तक नहीं मिला। एक दिन उसने किसी दूसरे के लिए लड़ा हो यह मालूम नहीं, समाज के लिए जिया हो यह पता नहीं। इसी तरह मनुष्य पेट के अंदर गुम हो जाता है। हजारों वर्षों से बहुत सारे सब पेट की लड़ाई में मरकर दूसरे सब बनने का यह कर्म रुका नहीं है, और वही यात्रा शव से कब्र में परिणत होता है। बहुत हो गया, अब मैं मनुष्य की शव यात्रा में जाना चाहता हूँ, न कि शव द्वारा होते हुए दूसरे शव की शव यात्रा में। थैंक यू सो मच। बहुत ही मार्मिक थी सर, और बहुत ही प्रैक्टिकल। एक बहुत सुंदर सा कोट है जो कि शव पर बात हो रही, शव यात्रा पर, कि जब जिंदा रहते हैं तो किसी को याद नहीं करते, छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाते हैं, और मरने के बाद बोलते हैं अच्छा आदमी था। तो बेहतर है जिंदा रहते कद्र करें। आगे अनुरोध करती हूँ अब लाल थंग लुआंगा चंगू साहब से। Okay, thank you. I'm very grateful to the Saiti Academy for giving me such an opportunity. As we see in the program sheet, I'm Lalthan Tuanga Chongtu from Mizoram. Today, I will read my poem in English first, in English and Mizo. I'll read my poem in English first, and after that in Mizo. My first poem, myself. I close my eyes, the agonies of life to not descry. To soar I haul, lest the wave swallow me whole. My Bible I devour, that the sun, moon, and star I may revere. To the cemetery I hasten, that the value of life I may comprehend. For heaven I yearn, the curse of despair to unlearn. My brain I till, that my thoughts with good be filled. In Mizo, Keima, Kovel from Nakamulanan, Kamay Mitsinga. Tui phone vel in Minland Bolonan, Katlan Sia. Tangvan Siar, Niletla, Ropui Nakatsier Tiam Nan, Bible Kakeva. Stringnun Hutzia, Kafiat Nan, Clan Mual Kapana. Baydona Rap Clausia, Tenghil Turin, Vanram Kabesaya. Ngay to na dik, ngay to in, Rilru Kaseng Train. My second poem is, Thou art never alone. Where do the days belong, till I did thy face, all the weeks pass, thou art never alone. I am always in thee, for thou hast lovingly seen me in thy bosom. I cannot be parted from thee, no matter if thou would long for me, thou art never alone. If thine heart should accept none other,
thou would forget me not. As the same should I be true, never will I let thee stray. My love, because I love thee, thou art never alone. My third poem is in miso malin yomlo. Karlam savin sakmelin tonan ni tamliam ma se malin yom ngai lo nang ma kom rangalom. Hangai na in min sui zom to wangin lakran kan ngai lo ve. Khoarin lung leng thin ma la malin yom ngai lo. I don lung ru ka leng dang I pom lo chuan min ngir ngai long. Chutin kei po rin omin mala yom kapal ngai long. Du lai kam ngai che wangin malin yom ngai lo. My third poem is Barren Desert. Through barren desert, drought hit grains of sand in the wind. Wandered I, seeking oasis of hope. Little mercy has the scorching sun, who did cross for me a wearied ground. Hearken, through thunder rumbling in the descent, and blinding flashes of lightning, a voice never before heard. Arise, slough on the paths of hope, through unkind sun and torrid winds, hopeless and grief-stricken if you fall, then forgiving well would not even remember your name. In miso, Thale ramro, vai vut kle kara chuan, tuina omna lampanin kakala. Chung tu ni frang chuan min bayin kataksa tu chavin arum tira. Ngai te kopui lo dura, kol pesor zo kara chuan, riat ngai lo o lo chuaka. Thoro beidong lovin trum kong zo la. Turni do da in mau klipui ton tlang ro. Lungaya beidong itluk mai chuan khovel hian tunge ini afngai long che. My last poem is Stoicism. Circling and battling with life's challenge, wish and hope I expect for the future. The past may be lined up with mistake. Some still harm me today. I am fighting them like an enemy while some I cannot overcome. I reserve a place for you in my heart. Years pass, but this heart still continues to be owned by you. Yet, you know nothing but my shortcoming. Your relative were exceptional in pointing out my flaws. Hard enough of constant reminders that I am not enough for you. For I cannot reach your expectations. I turn the bitter side of me so you may go and find your heart's desire. You may know how it feels if you at least got a little empathy. The moment I draw you to find your dreams, I realize that I love you more than myself. I miss you even more, staring at your shadow and wondering your whereabouts. My heart is yearning for you, and this you never know. Yet, this heart of stone, which is ego, would not let me come back to you. Where on earth will this lone soul find its comfort? Only God knows. In miso, malam clear base in siamin, ring nun hikasual vetak zeta, soon hulia ti sualtam tak na in tun tlang min volet tu pon Mel ma anga ka me kalan he thailo pon sutiang kara chuan ilo langa, katin lungai tan hun kasiama, kum sul tam liam ma se he katin lung hi, nang chau lo chuan luat thailo, ma se nang chuang katin lo na chau mu in, ilan rual te pon kathat nan husi lo. Kangai tam tok to sin katlin lo na lai chau min sia tiri I duai sam kan itak lova chuan I du than nge song tu chin an ka thum lo ka hlan ta ani kha kadin huna dingin karil ru han pula sia thiam na nen min en nge yang ma semo I duai sam zong tu ra ka ti atang chakhan ke ma ai ma in kalum hangai sok chia ama zong ai ka ngai zual chia ilhim thali chanchin thirin I ria lovin ka kolom lom che sin ma se he thin lung sakle chapo takhian in lam le ta rong kir phalo min dang tleta khoya nge ke in hamna tu chkamu ta kang le ka fellow pathian chawin afriani. Thank you. Actually, this is the best session. This is the best example for self-management and time management. We are on time. So thank you so much. Ma'am, up to you. In this session, we had originality of different voices in different languages. That could be, but just I would, oh, it's okay. That should be like, first we had a prayer song with the mountain
and it's in Toda Janjati, then Konkani, Indi, Chakama, Kasi, Kont, Limbu, Mizo, and I might have left some languages. But even though I'm not good in Hindi, I just observed the basic points of different poets, tribal poets. They all talked about their river and freedom fighters, rise of the sun, heartbeat, how they are heartbeated when rain comes, all these different things. But we had a unique culture. I come to understand the unique culture because we are already is oral tradition. After we become education, we try to make a literary form, and this forum, UNMESHA festival, gave us literary writing in a paper. Those days we talk originality, it comes from the heart, but different way of living, everything changes. We are going back to trace our originality and give our identification, and which is the human culture. Because all tribals, they have the ecology friendly with the soil and to the air also, in a simple way. That will be useful to the whole world. That's why they are looking to the tribals. But for economic purpose, economic development, we have to change our lifestyle and rushing. No time to think back like this. But anyhow, so this is what session we are finished. Maybe I will read my poet. I have to read it now, because this session within half an hour, this is a great, we got many things. It's a precious words we got, and we are very thankful to Sahitya Academy to drop our words in this ocean. So, I will read my poet. This poet may be reference to my own community in the future, because one of the old poet, I asked my elders are my reference book, not in any of the books, because we are only 2,000 people, and it's very rare language. It's a mixture of all Proto-Dravidians. One European man wrote, what is that, Emeno, Dr. Emeno, he wrote a book, but nobody can read, how to read that book. That time there was no audio. Audio is important for then listening the audio, word meaning we will find ourselves, then proper word could be translated. That's why our own tribal should come forward to make our language as a literature. That's why my request, I used to tell my grandchildren also, sometimes they find very difficult to pronounce some words. For example, I was telling my, the day a tiger came and caught our buffalo calves, then she was telling me, Pishi came like that. I said, what are you telling? It should be Pishi, Pew and Pish, Kuvar and Kuvar. There's a lot of difference, and the hard pronunciation, it's not by talking it comes. So the phonetic sounds also very important. So I'm going different way, I think. So in this poet, it is very old heritage places I have collected. It may be useful to our own people, and they recognize their mountains and where the ecology things. First I will read it in Toda language, or line by line I will translate, I don't know. First may I read it in pure of Toda language. I will say, Por Mahar Aril Ökish Mahar Koi, Parnar Parnordo, Tuindo Putnordo, Petmashar Ponet Muds, Kutoryar Canet Muds, Penavos Kuden, Kuridu Kashwit, Karmupov Otmov, Karvukish Otvaror. Pausar övertol, pausar övertun, otesjar polekol, ökut polkmadiri, kolken satyorva, kavoser tulorva, tu kerpuf, pyshakub, tu modern anakil, tashkavid,
that was, tas kuror, movin, petgon, gur, pengutar, petkarsom, naturgav, kinwatkal, peshten, kinargor, puvkat, korde, kugishgol, kirnas, malishgoi, koretu, parsorvach, kode, tiborvach, kinatil, ekishvar, penonbach, önbar, kones, kahorgor, pangup, kahorvas, pinasgul, pardaskor, pinasum, ardasnir, korte, normildit, kazmudu, tormilvach, tumilvach, sorry. Kas vos, kas durzvin, the kas, tur durzvin. So when I was referring the tur, the word, I couldn't find meaning because it's not spoken language. Tur is like a storm. So I found English meaning. So this is how I have to make a literature. Though I myself looking for the meaning. And I went to ask the elder people, what is tur? They are not speaking now. So tur is storm. Then I found the dictionary, storm and tur is in Toda language, like that we formed. Then in this thing, so these are all the places in future, like I read in books and refer to others, like that in future our people may refer, maybe through the Sahitya Academy book, something, then they will find out the correct meaning like that. So in English meaning, I will quickly read it because I don't want to take more time. Okay, Mom, I have time? Sorry. At Posher Mountain, we have the community put poet fruit first to the Tekushi god in mountain prayer. In the sacred place, Mini, all sacred ancestor gods and gods are meeting. Petmarsh Mountain and Kutori Mountain, thick clouds are forming to give a rain. Penavosh Kure, they got honey and cane available. Good honey and canes are available. Cane means we make a temple, only with the cane we make the temple. Pos sacred place, 7 pollors. That means high priests are wearing and doing the high rituals. In the place, Thukarpov, Thermil gods, tigers are leaping there and elephants are trumpeting. Kolikan river is a more holy river, worship the river. The village of the Toda called Tashkavit has a lot of milk and butter in a rich village. Petkon Guri, Petkar Swami is our ancestor god. There the temple floor is very smooth as it's smeared with butter and the walls are very transparent. We used to give ghee for lighting the lamp. Kinwotkal, Kinargor place, we have a strobilanthus plants. They are flowering. There is a lot of honey, we get it. So particularly when we do the research, the strobilanthus plant is flowering in our place once in 12 years. According to the flowering time, they calculate their years. There are 3 types of strobilanthus plants, 3 years and 6 years and 12 years. So our people used to follow these nature things and calculating their years and all. We should renovate our temple within 12 years. So they are looking to when the strobilanthus plants are flowering. So this are more connected with those lands. Forest god is standing in the mountain, Korde, and holding his hand on the mountain. Kinateli river is holy river. In that way, our souls are pausing to reach the other world. In Nilgiri, we have 2 worlds. Because we believe we are originated from the Nilgiri and our first god vanished, then we believe we are following his route, other world. So other world, this world, both are in Nilgiri only. So we believe that through that Kinatili river we are pausing. Contro mountain, sacred tiger and black snake kurvas are there. In that there's a mountain called Contro. There tiger is there. Tiger won't harm us. If tiger comes, we just throw the butter
Not we are vegetarian tribe, we are not supposed to hunt, but by praying we throw the butter, then it turns into the stone. We have some stones also in the Nilgiri, like tiger is opening to the mouth like that. So we are telling in this mountain tiger is there, and snake is our protector, kurvars. Toda name I am telling, maybe you can find English, I am collecting the other names also. So kurvar snake also there in a particular thing. Then Punashuli placed there new grasses for grazing and water flows for animals to drink. So more water, more grass. In the dry season we used to migrate, and we know the sacred place where we have a grass and where we have the water. Mountain Tekas created a monsoon. He made a divine place for the monsoon. So monsoon is starting there, rounding the feet of the mountain god. Mountain god Tekas, I think. He created the mountains. We don't have statue, but we have a stories. She or he like that. So the mountain god created a monsoon. How means they were keeping the toy buffaloes made up of the wood, kept under the tree and climbed up the tree, and they spit the fruit juice. That juice fallen on the toy buffalo made up of the toy. Then buffalo created. Then force of the split, become mist and rain and storm. So this mountain is controlling, and every year we see before monsoon starts, the mists are surrounded that mountain. So even today. In Koti God mountain, Toda people put fire in the grass and smoke rises. Hill buffaloes are letting into the sum in the river. This is the way of a river worship. So we are letting the buffaloes, which river means Kolikin river, and they may forget in future. But this poetry says where we did it, where we are going to do in future if they want to follow. Even it's endangered language, they forget the language. This will be small reference for our people. Thank you very much. I have taken long time. Sorry. बहुत सुंदर। बिल्कुल मैम, एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली कि बहुत सारे शब्द, अगर मैं अपनी भाषा या अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र, अपने भाषाई ज्ञान की बात करूं, तो हमारे यहाँ भी पीढ़ियां जब बात करती वो झलना क्या होता है, या और भी ऐसे क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं जो हमें हमारी दादी नानी से सुनने मिलती थी, तो वाकई अगर ये इसको रख लिया जाए संभाल कर, तो आने वाली कितनी पीढ़ियों को वो सारी चीजें वैसी की वैसी रिकॉल हो जाएंगी जो आप बोल रही थी कि रेफरेंस की बात कर रही थी। तो वाकई ये सारी चीजें होनी चाहिए, जरूरी है, और ये सब ये जिम्मेदारी आप ही लोगों के कंधे पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आखिरी परंपरा हमारे सेशन की कि हम अंग वस्त्रम के साथ अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगी, हम सम्मान अंग वस्त्रम और फिर उसके बाद फोटो सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। But this shape of the temple, we made with, we are jungle, we made making this temple by ourselves. It is a symbolic of the rainbow, because we never seen the off-barrel shape. In many of the written books, valuable books, they said off-barrel shape, where we could have seen the barrel shape. So tribal people always very close to the nature. They made this temple with the shape of rainbow shape. We believe it will be good harmony in the house. That's why temple and houses are in the shape of rainbow shape. वाओ मैम, Some information. मुझे याद है गौंड कलाकार से मेरा मैं साक्षात्कार कर रही थी उनसे, तो एक उन्होंने ना पूरी बातचीत में बहुत सुंदर बात कही थी, जो मेरे मध्य प्रदेश के थोड़े बहुत लोग अगर बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि वो जो भी वो अपनी भाषा में मुझे समझा रही थी, मैं समझ, जैसे अभी टूटा फूटा मैं समझ रही थी आपकी अपनी भाषाओं में, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि वो तभी काम करते हैं, तभी लिखते हैं या कोई भी कलाकृति तैयार करते हैं जब उनका मन होता है। तो आप मन के मालिक हैं। बहुत खूबसूरत बात है, हमें लगता है हम सबको ही मन के मालिक होना चाहिए। Thank you. शुरुआत करते हैं हम सर से। Myself? Yes, please. Thank you for coming. तालियां विनोद गांधी से। मैम थोड़ा फोटो के लिए थोड़ा सा हम पॉज लेंगे। Vinod S.
How we greet, no? If younger people, we greet telling the name S. If it's elder people, we greet with the feet. First, we have to greet everybody. Then only we go to the God's place, temple. Bakhiya Mon Rinja. मैम फोटो सेशन विजय देव वर्मा सर लगता पहले भी स्वागत हो चुका है विजय सर अच्छा मेदिनीधर सर अच्छा वो उनका शायद गुमान सिंह सुब्बा सर लाल थंडू अंगा चंगुत सर और बासमल्ली मैम के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ मैम आप दोनों ही आ जाइए मुझे ऐसा लगता है मैं अनुरोध करती हूँ मैम के स्वागत के लिए अंग वस्त्रम के साथ लेके बेटा ठीक हाँ हाँ पहले मैम का स्वागत हो जाए साथ में